Okay. Okay, Ji. Let's start today's lecture. The week is six, and today we will start lecture number six. Sorry, lecture number three in terms of the documents. Otherwise, it is just lecture number six. Okay. So please मैं एक बार कंफर्म करना चाहूँगा आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है Yes, sir. Adi. and is the screen visible to you guys? Yes, sir. Okay, thank you. Okay, Ji. So today's topic of the course Occupational Health and Safety is the machinery. Okay, so the machines which are an important part of workplace, and as they are essential for the workplace, they are also one of the most significantly dangerous things as well. Okay, so जब भी हम किसी मशीन के साथ ऑपरेट कर रहे होते हैं, so the health risks and the safety risks increase, right? So machines are essential in the workplace for production, but they can also pose a significant risk to workers' safety health. Okay. It is important to ensure that machines are designed and safeguarded to prevent workplace accidents and injuries. So we shall see two of these things. फर्स्ट तो हमारी कोशिश है कि मशीन को डिज़ाइन ही इस तरीके से किया जाए कि वो वर्क प्लेस के लिए सेफ हो, राइट? वर्क प्लेस के लिए भी और वर्कर्स के लिए भी। पहले तो उसका डिज़ाइन ही इसी तरह से किया जाए किसी भी स्पेसिफिक मशीन को। बट समटाइम्स वी हैव द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ डिज़ाइन कि हम उसको कम्प्लीटली डिज़ाइन ऐसे नहीं कर सकते। देन वट डू वी डू कि हम उसके ऊपर कुछ सेफ गार्ड या कुछ एडिशनल सेफ गार्ड्स ऐड कर देते हैं which help us to uh, save ourselves from workplace injuries and accidents, right? So importance of safety practices when we are using machines. Okay, so I hope this is clear. Safety practices are essential for preventing accidents and injuries at the workplace. सेफ्टी प्रैक्टिसेस इंक्लूड प्रॉपर ट्रेनिंग। ओके, अभी तक हमने ये देख लिया कि दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरी है ईच एम्प्लॉय की, आइदर ही और शी इज़ एन इंजीनियर और लेबर वर्कर। Hazard identification, again, what kind of hazard may occur or what kind of hazard has occurred, and regular maintenance and inspection of equipment. Again, this is one of the most important things. यानी कि हम जो इक्विपमेंट या मशीनरी यूज कर रहे हैं उसकी रेगुलर मेंटेनेंस हो और साथ साथ उसकी इंस्पेक्शन भी हो। Safety practices can prevent injuries and fatalities, reduce lost productivity, and avoid costly lawsuits and fines. देखें, अगर किसी एम्प्लॉय ड्यूरिंग सम प्रोडक्शन ऑपरेशन किसी मशीन की वजह से इंजरी आ गई है, ठीक है, या इवन के फैटल मतलब कि खुदा न खास्ता कोई जानी नुकसान हो गया, तो ये बजाते खुद कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा इशू है। इसके साथ डेफिनेटली जिस वक्त कोई लेबर अगर इस दुनिया से चला गया या इंजर हो गया, ठीक है, तो डेफिनेटली उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी पर इफेक्ट आएगा। बेशक एक दिन के लिए आए, एक दिन के अंदर अंदर आप हायर नहीं कर सकते, बेशक एक दिन के लिए आए, लेकिन दैट इज स्टिल अ प्रॉब्लम क्योंकि एक दिन की जो रिडक्शन है दैट मे बी अ वेरी significant chunk, in the overall productivity of the organization or company. And after that, one more thing, that is to avoid costly lawsuits and fines, because due to these two factors, this factor, इंजरी आने पर या मौत होने पर किसी एम्प्लॉय की, normally in good countries, the company which will be directly responsible for that thing, usko they will have to bear some fines or even lawsuits. Okay,
So importance of design and safeguarding of machine. So what is the importance? The design and safeguarding of machines are essential. Okay, so design means, for example, एक मशीन है जिसको आपने एक क्लोज्ड बनाया कंटेनर, ठीक है? तो दिस मीन्स कि वो डायरेक्टली वर्कर के साथ इट इज़ नॉट इन कंटेंट. आई होप कि आपको ये समझ आ जाए. So, for example, there is a machine inside here and it is completely designed in a way that it is covered. एक तो ये scenario हो गया. Okay. So the worker is not directly exposed. This is the design. But sometimes this is not the case. For example, in lathe machine, we cannot completely design that thing in a sense कि हम उसको enclose नहीं कर सकते. Right? We need to visualize the tool here. और यहाँ से वो ओपन होता है, तो व्हाट डू वी डू कि हम उस पर एक सेफ गार्ड, एडिशनल सेफ गार्ड अप्लाई कर देते हैं. राइट, सो दिस इज सेफ गार्डिंग ऑफ machines are essential for ensuring worker safety and preventing workplace accidents. Okay, the design of machines should consider human factors such as ease of use, first of all, the most important, ease of use, and accessibility, humans की accessibility हो. Okay, as well as safety features. Again, this is an important thing, such as guards, emergency stops, etc. Safeguarding of machines involves physical barriers. There could be physical barriers जहाँ से आप आगे ना बढ़ सकें जिस रेंज से, such as guards, barriers, and warning devices such as alarms and lights. Okay, so we have this. We also have these two things at safeguards. Okay, so there are warning devices, as well as alarms and lights. Risk assessment. Okay, a risk assessment is an essential part of designing and safeguarding machines. Okay, let's see what is this risk assessment. What is the purpose of this risk assessment? A risk assessment identifies potential hazards associated with machine use and provides recommendations for modification. Okay, so what are the potential hazards associated with that machine? The purpose of risk assessment is to identify this thing, potential hazards. This means कि जो खुदा न खास्ता जो हादसात अगर कर सकते हैं with this machine, इसकी identification is the risk assessment. Okay, and then not only identification but also provides recommendations for modification. How can we modify? What are the recommendations through which we can modify this specific hazard, this specific machine to uh, discard this potential hazard or to avoid this potential hazard? Okay. A risk assessment should be conducted before purchasing or installing new equipment and regularly thereafter. अब ज़रूरी नहीं कि आप रिस्क असेसमेंट जो है वो only when you are purchasing or installing new equipment उसी टाइम आप you will you know uh, डू दिस रिस्क असेसमेंट. एक बार तो वो डेफिनेटली आप करेंगे. यू शुड नो कि आपकी जो मशीन आ रही है इन योर वर्क प्लेस, वट आर द पोटेंशियल रिस्क हैजर्ड्स, ताकि आप उसके मुताबिक अपने वर्क प्लेस को रेडी करें. इफ़ यू नीड एडिशनल सेफ गार्ड्स यू शुड बी रेडी, राइट. Also, after you have installed that machine on your work site, उसके बाद risk assessment is a regular process. It could be weekly, it could be daily, it could be monthly or yearly, depending upon the situation or the machine. Okay. So design considerations for machine safety. So what are the design considerations? Okay. So let's see these design considerations. The first one is the design of a machine plays a crucial role in its safety and usability. Okay. So again, safety usability दोनों में design plays an important role. Designers should
also consider the placement of controls and displays as well as the need of ergonomic features. So, can anybody tell me what is meant by this ergonomic फीचर? इससे आपकी क्या मुराद होगी इस कॉन्टेक्स्ट में? जी, आप ऑनलाइन हैं, मेरे साथ हैं, या लीव कर चुके हैं? एनीवन? सर ये जो वर्क प्लेस पर बोलें बोलें। एर्गोनॉमिक पढ़े थे उसी से रिलेटेड होगा। जी जी, क्या चीज़ होगी? काइंडली थोड़ा कुछ बता दें जस्ट। सर वर्क एर्गोनॉमिक। प्लेस पर जो होते थे एसेट्स उनके बारे में था। ओके, चले मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। देखिए, एर्गोनॉमिक फीचर्स मींस, फॉर एग्जांपल। जी जी, बोलें, अगर कोई और बोलना चाह रहा है तो बोलें। जैसे हमारे पास डिजाइन ऑफ सीट्स या फिर टेबल जिस पर राइट बैठते हैं। राइट, एग्जैक्टली। सो फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज अ लेथ मशीन, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है? एंड द वर्कर नीड, अब ये एक लेथ मशीन है, ठीक है? और जो वर्कर है उसने यहाँ कहीं खड़ा होना है, और लेथ मशीन की वर्किंग यहाँ पर है, ठीक है? सो अब आप देखें कि लेट्स अज्यूम दैट द हाइट द वर्कर इज लाइक दिस। सो अब इसको रीच करना इस पॉइंट तक विल बी डिफिकल्ट, राइट? सिमिलरली एक और जगह है, या हम ये कह सकते हैं कि किसी ने ऐसे डिजाइन कर दिया लेथ मशीन को कि स्टैंडिंग पॉइंट जहां पर है वर्कर का। ओके, अगेन दिस इज आल्सो अ प्रॉब्लम, ठीक है? या सीटिंग अरेंजमेंट ऐसी की है इस लेथ मशीन के लिए कि वो जो सीट है वो यहाँ कहीं इंस्टॉल कर दी है। अब वर्कर को यहाँ से आगे जाना पड़ेगा, ठीक है? इट विल बी वेरी क्लमजी फॉर द वर्कर एज वेल, और वो सूटेबल नहीं है, ठीक है? सो दीज आर द एर्गोनॉमिक फीचर्स। या कोई एक ऐसा हैंडल है कि जिसको किसी ऑकवर्ड तरीके से ग्रैब करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी हैंड इंजरी हो सकती है, या परमानेंट अभी एकदम से पता ना चले, लेकिन थोड़ी देर से बाद आपको उसका इफेक्ट नजर आना शुरू। ओके, सो दीज आर द ergonomic features. Machines should be designed with safety in mind from the beginning rather than adding safety features as an afterthought. So first priority should all be always be this. From the beginning, we should have in mind that we are designing the machine in such a way that it is safe to use. Okay, so it should not be a second option, या इट शुड नॉट बी आवर सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट, यानी कि हमने बाद में नहीं सोचना, ठीक है? उसी पॉइंट पर वी शुड बी क्लियर कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू। हाँ, देयर मे बी अ केस वेयर वी कैन नॉट डिजाइन some features of the machines keeping safety in mind, then we can add some further safety features, but initially this should be the our goal. Okay. So, in addition to these design considerations, machines should also be designed with ease of use in mind to minimize the risk of operator. So, ये दोनों चीजें. The second one is ease of use. This is also very important. Okay, so both things are equally important, but just safety is always first. Safeguarding of machines. Okay, so here यही मैं आपको एग्जांपल बार बार बता रहा था. So lathe machine के ऊपर this yellow thing is your safeguard. It is here to protect you. Okay, now you can see the tool working inside, but you are also protected from those flying particles. Okay. So, safeguarding of machines involves physical barriers such as guards and barriers and warning devices such as alarms and light. Okay, so here we जो हमें नजर आ रहा है, that is a guard. This is a safety guard. So there may also be some kind of signs here, and also be lights and alarms, right? इस केस में there may be some alarm
कि अगर आपने कोई दो ऐसे ऑपरेशंस इकट्ठे परफॉर्म कर दिए जिनको नहीं करना था, तो आपका लाइट्स या अलार्म्स जो हैं वो शुरू हो जाएं, अपना काम करना शुरू हो जाएं। तो safeguarding devices should be designed and installed to prevent workers from accessing hazardous area during machine operation. अगेन ये सामने हमारा एग्जांपल है। अब जब ये मशीनिंग का ऑपरेशन हो रहा है, तो ये सेफ गार्ड इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन आपकी एक्सेस इनसाइड हेयर वो लिमिटेड हो जाए। ओके। और इसी तरह जो फ्लाइंग आ रहे हैं छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स, वो भी अंदर ही ट्रैप हो रादर देन गोइंग आउटसाइड, और वो आपको भी आकर डेंजर आपके मुंह को या हाथों को या इवन पूरी बॉडी को आप किसी ना किसी किस्म का हैजर्डस कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं। वार्निंग डिवाइसेस should be used to alert workers of potential hazards such as start of machine, प्रेजेंस ऑफ हैजर्ड इन द वर्क प्लेस। ओके। सो इसकी एक एग्जांपल मैं आपको कोट करता हूँ। आपके जो वो आजकल जो ये लोडर रिक्शाज जो हैं बड़े वाले, वो जो ब्राउन कलर के होते हैं, ठीक है, लोडर्स, तो वो जिस वक्त बैक पे आते हैं, रिवर्स होते हैं, तो उसके साथ एक वो वार्निंग साइन ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है। ठीक है। सो एक एग्जांपल है उसकी, क्या वो रिवर्स हो रहा है, तो वो वार्निंग, अगर आपको याद हो वो ये बात कर, इट इज़ अ रिकॉर्डेड वॉइस जो कि बार बार वो रिपीट हो रही होती है, बट नाउ वी आर फेमिलियर कि अच्छा वो रिक्शा पीछे आ रहा है, दैट थिंग दैट लोडर इज कमिंग बैकवर्ड्स, तो हमें थोड़ा सा साइड पर हो जाना चाहिए। ओके। गार्डिंग ऑफ मूविंग पार्ट्स। ओके, सो अब कुछ हम जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ मशीन्स हैं उनकी गार्डिंग कैसे करनी है, तो दैट वी विल सी। Guards are physical barriers that prevent workers from accessing moving parts of machinery. Okay, so guards जो हैं, that their purpose is to uh, limit the access from the moving parts, okay, of the machinery. So for example here it is some kind of motor, okay, and that is rotating gear, सॉरी, पुली एंड बेल्ट सिस्टम। ठीक हो गया। सो अब वो बेल्ट खुदा न खास्ता अगर टूटे और कोई वर्कर यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है, सो देर इज अ चांस कि वो बेल्ट आकर उसके साथ टकरा सकती है, एंड दीज मशीन्स आर ऑपरेटिंग यूजली एट वेरी हाई आरपीएम्स। ठीक है, सो वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। टू अवॉइड दैट आप क्या करते हैं कि यू जस्ट पुट अ गार्ड ऑन इट। ठीक है, आपने गार्ड पुट कर दिया। अब नॉर्मल ऑपरेशन में आपके पास ये गार्ड है। अच्छा, अगर आपने अब देखें इस गार्ड का एक नुकसान भी, फायदा तो ये हो गया कि हमारी बचत होगी, ठीक है, नुकसान क्या होगा? कैन एनीबडी टेल मी? जी, एनीवन? नुकसान ये हुआ है कि विजिबिलिटी खत्म हो गई है, राइट? सो नाउ वी कैन नॉट डायरेक्टली सी द सिचुएशन ऑफ दैट बेल्ट, राइट? सो उस केस में जस्ट देयर इज एन ऑप्शन कि हम इसको कोई ऐसा मटेरियल जैसे यहाँ पर यूज हुआ हुआ है ऐसा मटेरियल यूज करें, या फिर हमने एक इंस्पेक्शन पैनल इंस्टॉल कर दिया। ओके, नाउ व्हेन वी वांट टू सी व्हाट इज हैपनिंग टू द बेल्ट, तो हम यहाँ से इसे ओपन करके उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ओके, so guards should be designed and installed to prevent workers from accessing hazardous area during machine operation. Guards should be securely fastened and easily removable for maintenance and repair. Okay, तो ये guards जो है, हाँ, easily हम इसे इंस्टॉल भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। ओके, इसका ये फीचर होता है और ऐसा ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, दिस मीन्स कि आपके गार्ड्स में कोई प्रॉब्लम है। सेम गोज विद दिस लेथ मशीन एज वेल। ये लेथ गार्ड है ऊपर, बट अब इसको ट्रांसपेरेंट रखा गया क्योंकि लेथ हमें 24 घंटे जब भी हम उस पर काम कर रहे हैं, इट शुड बी विजिबल टू अस, राइट? ओके, सो इंटरलॉक्स।
Okay, interlocks are devices that prevent the operation of machinery when a guard or barrier is not in place. So इंटरलॉक मीन्स कि ऐसे लॉक्स के अगर एक मशीन के ऊपर देयर इज नो गार्ड और बैरियर तो वो मशीन ऑपरेट ही नहीं करेगी, राइट? सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरलॉक्स when for example, in this case, if you do not have this barrier or guard on the lathe machine, so शायद इसमें एक इंटरलॉक इंस्टॉल हो जो कि जब तक आप इसको देखें, दिस कैन बी ओपन लाइक दिस, ऐसे इस तरफ से तो फिक्स है ना, तो ये ओपन हो सकता है यहाँ से ऐसे। तो जब तक आप इसको ऐसे अपनी जगह पर वापस नहीं लाएंगे, यू कैन नॉट ऑपरेट द लेथ मशीन। दिस थिंग इज इंश्योर्ड बाय इंटरलॉक्स। ओके, interlocks should be designed and installed to prevent workers from accessing hazardous areas during machine operation. Interlocks should be tested regularly to ensure they are working properly. It's इस चीज़ को ensure किया जाए कि वो properly work भी कर रहे हैं या नहीं. Because with the passage of time, there is a chance कि interlocks जो हैं वो काम करना बंद कर दें. Okay, तो उनको replace करना हो या repair करना हो, that is the responsibility of definitely the employer. Emergency stops. Okay, so emergency stops are devices that stop machine operation in case of emergency. Emergency stops should be located in easily accessible areas and clearly marked. Emergency stops should be tested regularly to ensure they are working properly. Okay, so इसकी एक एग्जांपल, एक तो ये यहाँ पर कोई वो मिक्सिंग मशीन है, उस पर भी emergency stop है, but there is also an emergency stop on lathe machine, ठीक है, and it is easily accessible, बिल्कुल it is on the front of the machine, ठीक है, and if you are standing there तो अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कोई situation होती है, just press that emergency stop and it will stop all the operations of the lathe machine. Warning devices, again you are familiar with these things. Okay, these are lights, emergency lights. These are the alarms. Okay. Warning devices such as alarms and lights are used to alert workers of potential hazards. Warning devices should be located in easily visible and audible areas, यानी कि जहाँ visibility भी हो और audibility भी हो. Warning devices should be tested regularly to ensure they are working properly. Okay. So safety training is essential for preventing accidents and injuries in the workplace. Again, safety training बहुत ज़रूरी है. एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करना हमारा मकसद है. हम प्रिवेंशन की तरफ जाते हैं, नॉट आफ्टर द एक्सीडेंट हैज़ हैपेंड. तो उसके बाद की जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट वी वांट के कुछ भी हो जाए तो एक्सीडेंट अगर ना हो, ये हमारी हमेशा कोशिश यही होती है. Safety training should be conducted regularly and updated as needed. Okay, so safety training should be regularly conducted and updated. Training should cover the proper use of machines, including safety procedures, emergency stops, and lockout, tag out procedures. Okay, so it should all be there for the safety training. Employees should also be trained on how to identify potential hazards and how to report unsafe conditions to their supervisors. So ये भी ज़रूरी है. ओके, इस बात को मेक श्योर किया जाए कि आपका जो एम्प्लॉय है दैट रिपोर्ट्स एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम occurring at the site. Okay, so I think we should end the lecture here. So ओके, सो सब मेरे साथ हैं अभी यानी. अच्छा, ओके, लेट मी स्टॉप द लेक्चर फर्स्ट.